हमने क्या टॉपिक करा था, दैट इज स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट पढ़ा था ना। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड अनबैलेंस लोड और उनके बीच में रिलेशनशिप। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स का बैलेंस लोड का आता है जो जनरली देखा गया है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है 6 नंबर का अनबैलेंस लोड का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ये पावर मेजरमेंट का भी क्वेश्चन डालते हैं तो इसका ये कम कर देंगे। तो बेसिकली अगर बीटी पढ़ रहे हो तो बीटी के केस में ये तुम्हारा आता है 10 मार्क्स का। ओके, तो तुम्हें सिंपल स्टार, डेल्टा और पावर मेजरमेंट 3 टॉपिक पढ़ने हैं और तीनों टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और वो भी 10 मार्क्स के। तो ये इसलिए काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। तो बैलेंस लोड में क्या था हमारे पास कि सारे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या थी, सेम थी, बट अनबैलेंस लोड में हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें करंट फ्लो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा या अलग रहेगा, that would also be different, right? So in this case now we'll study about the star and delta. Let me tell you first the formulas, okay, then based on that I will discuss the questions. And इसमें अब 2 टाइप्स के फॉर्मूलेज होते हैं, वन विच आई टोल्ड यू, वन मे बी अनदर एंगल वाला फॉर्मूला होता है। तो दोनों ही तुम्हें कंसिडर करके चलने होंगे। ओके, नाउ सी दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन. Now next I'll tell you first ki what is the phase sequence. So now we'll learn about the phase sequence. What is phase sequence? Phase sequence is like R, Y, B. So there are 2 types of phase sequence. One is the positive phase sequence, another one is the negative phase sequence. Positive phase sequence way will follow this method R, Y, B, and negative phase sequence will follow this method R, B, Y. Okay. What is basically this RYB? Here, as you know, there is 3 phase. 3 phase means 3 wires and 3 wires का will consider the angle. तो कितना डिफरेंस होएगा, 120 120 होएगा, बिकॉज पूरा 360 होता है। ये R हो गया, ये Y हो गया एंड ये B हो गया। अब इफ इट इज पॉजिटिव सीक्वेंस तो R के बाद ये कहाँ जाएगा, Y पे जाएगा, Y के बाद ये कहाँ जाएगा, B पे जाएगा। बट इफ इट इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस तो उस केस में कैसे चलेगा, ये आर, वाई, बी, आर के बाद ये कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा, बी के बाद ये कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। नाउ सी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल दे विल ओनली मेंशन कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो तुम्हें आर वाई बी के अकॉर्डिंग चलना है, बट इफ दे मेंशन दैट इट्स अ नेगेटिव फेज सीक्वेंस देन वी नीड टू मूव इट अकॉर्डिंग टू आर बी वाई, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि आर वाई बी और आर बी वाई का क्या रोल है, लाइक आई टेल यू। फर्स्ट इसमें एंगल डिफरेंस देखो कितना है, आर टू वाई 120 डिग्री, वाई टू बी 120 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर आई फाइल कंसिडर आर टू बी डिफरेंस दैट वुड बी हाउ मच, 240 डिग्री होगा, यही होगा ना, यस और नो, ठीक है। नाउ एज यू नो कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वोल्टेज इज डिफरेंट बट करंट इज सेम, तो IL इज इक्वल्स टू IPH, वो सेम रहेगा करंट बट वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो फॉर अनबैलेंस्ड लोड व्हाट विल कंसिडर, तुम्हें पता है कि 3 लाइन वोल्टेज है, जैसे अगर बैलेंस्ड होता तो बैलेंस के केस में व्हाट यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला, VL इज इक्वल्स टू √3 VPH फॉर द केस ऑफ बैलेंस्ड लोड। बट इफ देयर इज अनबैलेंस्ड तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो क्या फॉर्मूला होगा, वो विल हैव द लाइन वोल्टेज, 3 लाइन वोल्टेज है VRY। अब देखो मैं बताती हूँ कि सीक्वेंस कैसे चलता है, RYB, तो R के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो VRY, देन Y के बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है, सो VYB, देन B के बाद व्हाट विल कम, BR विल कम, सो इट वुड बी VBR। ओके, क्लियर। तो VRY इज इक्वल्स टू हाउ मच, VRN minus VYN, VYB is how much, VYN, VYB कितना हो जाएगा, VYN minus VBN
and VBR means VBN minus VRN. ठीक है? The thing is different is that कि balanced load will use this formula, and in case of unbalanced load we are using this formula. Clear? Similarly, for the delta connection, as you know, in the delta connection voltage is same, so VL is equal to VPH for balanced and as well as for unbalanced only, but the current is different. So IL would be equals to root 3 IPH for balanced load, and for unbalanced, ये ध्यान से देखना, in this IR is the line current, IY is the line current, and IB is the line current. So sequence is, as I told you, RYB की sequence है, because RYB is positive and automatically will take the positive sequence only, not negative sequence. तो IR है, तो it would be R के बाद Y, then B के बाद R. So it would be IRY minus IBR. Similarly, IYB minus IB खत्म, R के बाद Y, IRY. IB would be IBR minus IYB. Okay. Now see, this is from your paper 2023. They said 3 loads, ZRY, ZYB and ZBR. So what does it mean? It is the case of unbalanced. If the impedance value are different, then that would be the case of unbalanced, right? So let us write it down what they have given. ZRY they have given as 50 plus J40. ZYB they have given as 100. And ZBR they have given as 80 minus J60. They all are connected in delta. So as you know, in delta, voltage is equal to, line voltage must be equal to phase voltage. Across a balanced 3-phase 415 volt. As I told you, ki this voltage would always be the line voltage. Never consider this voltage as a phase voltage. So it would be 415 volt, because they didn't mention always, it would be VL only. Frequency, and they mentioned the sequence RYB. Assuming RY as a reference means automatically we assume RY as a reference only. Determine the phase current. So we need to calculate phase current means IPH, and IPH would be how much? Like IRY, we need to calculate IYB, we need to calculate IBR, we need to calculate, right? Remember I told you, write it down here also, this IR, IY, IB, these are the line currents and these are the phase currents. Similarly, these are the line voltage and these are the phase voltage. Okay, so we need to calculate phase current and the circulating current. So for that, as you know the formula, IPH would be equal to IRY, right? For that we VPH divided by ZPH. Correct or not? Tell me. So VPH is how much? VL is how much? That is 415, right? 415. So see, they consider ki RY as a reference. तो पहले वाला voltage VRY is how much? 415 angle 0 degree. VYB would be equal to 400 and angle minus 120 degree. And VBR is how much? 415 angle 1 plus 120 degree. See how it comes? Just check it out. I told you कि R और Y के बीच का difference, it is negative 120 ना, because it is moving downwards, right? And R and B के बीच का difference, if we'll see, then it would be negative 240 और ऊपर से देखेंगे तो it would be plus 120. So we can write down anything. ये समझ में आया? R और Y के बीच का एंगल इस नीचे से जा रहा है, so it would be minus 120. R and B के बीच का एंगल is plus 120. If we'll see from the नीचे downward sides only, then it would be minus 240. So you can write down both the things, like VRY would be equal to 415 angle 0 degree. Next VYB would be equal to 415 angle minus 120 degree. VBR would be equal to 415 angle
maybe minus 240 degree you can write it down, or you can write it down as plus 120 degrees. So it's your wish, either you can use this value or you can use this value. ठीक है, clear है? अब now after that, so we need to calculate IRY is equals to how much? Tell me. That would be VRY divided by ZRY. VRY is how much? 415 angle 0 degree. ZRY we know 50 plus J40. Similarly, we can get IYB. That would be VYB divided by ZYB. That is 415 angle minus 120 degree divided by 100. IBR is equals to VBR divided by ZBR is equals to 415 angle 120 degree divided by 80 minus J60. Now you can solve it, right? Yes or no? Then you will get some value. But they are asking phase current, and the circulating current means the line current. Now see this formula. If you know IRY, IBR, can you get IR? If you know IYB and this one, see what is the formula. Basically, we can't apply it directly through the line, because formula is always VPH is equals to IPH into ZPH, right? I told you Z is always in phase. So that's why I took VPH, that's why I took ZPH, that's why our current would be phase current only, not the line current. If we want to calculate line current, we have to use this formula. Simple. There are lots and lots of formulas. Don't go for any another formula. From these simple formulas, your answer will be there. ठीक है? Okay, now in the second part, they are asking line current and the phasor sum of line current. So basically, phasor sum of line current means IR plus IY plus IB should be equal to IN. So ideally, in ideal cases, IR plus IY plus IB must be equal to 0. This shows that there is no leakage current. Okay, but if you'll get some IN, that IN shows that there is some leakage current. So that doesn't matter. It can be 0, it cannot be 0. They are asking the phasor sum, so we simply need to calculate it. Clear? अब now next लास्ट टॉपिक है इसका. अब तीनों टॉपिक करवा दिए मैंने तुम्हें, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और तीसरा है पावर मेजरमेंट. फिर इसके बाद सारे PYQ सॉल्व करेंगे. पावर मेजरमेंट में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक फॉर्मूले याद करने, वो भी याद नहीं करने बिकॉज यू आर गिवन विद द हैंडबुक. सो इन दिस विल हैव नीड टू कैलकुलेट टोटल पावर. Total power is how much? W1 plus W2. Basically, we'll use 2 wattmeter method for the calculation of power. I'm not telling you the derivation because again derivation is not in your syllabus. And you know कि generally total power का formula is √3 VL IL cos phi. All these formulas are given in your handbook, right? So for that we need to get cos phi. Cos phi का formula is cos of tan inverse √3 of W2 minus W1 divided by W2 plus W1. What is W1 over here? That is VL IL cos of 30 plus phi. What is W2 over here? VL IL cos of 30 minus phi. ठीक है? Now if you'll practice from previous year end term questions, so try to first practice the solved PYQs. Then only you will be able to do the unsolved PYQs, right? For any doubts, you can contact me on this number. I'll provide you notes and every material to you. Okay? Okay. Bye-bye.